Okay, students, let me give you a brief introduction about this lab. This lab is for VHDL programming. VHDL is one of the languages wherein we describe our hardware. We have been already aware with languages like C, Python, and all the languages. But when it comes to description of hardware, we may use VHDL. We generally call them HDL, that is hardware description languages. And one of the types of these languages is VHDL. So let me introduce this language to you, and later on we will be able to do some programs based on this language also. So the first part of this is understanding what VHDL stands for. So VHDL is very high speed integrated circuit hardware description language. So it's only the V stands for this, and HDL stands for hardware description language. As I already said that it is one of the types of the hardware description language. So what do I mean by this hardware description language? All those hardwares जो आप digital में देखते हो, digital circuit design आपने पढ़ा होगा, तो जो आप different circuits, let's take an example, एक basic AND gate को आप देखते हो. एक AND gate के लिए आपके पास already एक IC है या एक full adder या एक multiplexer, so you already have an IC. Now maybe if you want to design that using your language, code language, so HDL gives you an option or VHDL gives you an option for that. अब ये simple systems की बात नहीं है, लेकिन we can design complex systems also. So you have a soft core option for any system you want to design. Obviously when you're in your lab or you're designing a project, you won't design your basic gates because उसके लिए तो IC already available है. लेकिन कुछ ऐसी नई चीज़ें जो आप बनाना चाहेंगे, सो फॉर दैट यू कैन यूज़ दिस HDL लैंग्वेज. इस HDL लैंग्वेज को आप यूज़ कर सकते हो एंड यू कैन कन्वर्ट दैट आइडिया इनटू अ सॉफ्ट कोर which is later on burnt, or you can say that is placed in an FPGA, and that FPGA works as a soft core for you. Anyways, moving on. So we understood that by VHDL we will be able to describe the behavior of the electronic circuit या कोई system जो हमारे पास होगा. So first of all, this was standardized by IEEE through IEEE 1076 standard. Then so origin of VHDL is somewhere around 1980s, and it relates to the American Defense Department. So VHDL was standardized in 1987 finally by IEEE for describing digital hardware used by the industry worldwide. It is accepted as one of the most important languages for specifying, verifying and designing of electronics. That is, जो भी आप कोई electronic device बना रहे हैं, maybe you have an option of describing that using VHDL code itself, and वो सीधा soft core ही आप किसी और system में use कर सकते हैं. So VHDL से हम किसी अपने design को synthesize भी कर सकते हैं, simulate भी कर सकते हैं, obviously by using certain synthesizers and simulators. The biggest advantage of VHDL is all the major tool manufacturers support this VHDL. That means अगर आपने एक VHDL code किसी एक system पे लिखा, you can easily shift that to a different platform as well. So therefore we realize that VHDL is technology or vendor independent. That is, if your maybe fabric is designed at 180 nanometer, by fabric I mean आपका कोई FPGA है, वो Intel ने बनाया है for example, तो अब आपको कुछ requirement है for say some higher input output pins. So maybe you now move this code towards a different vendor. Let's say we create an imaginary vendor. Sintel is a vendor. So Sintel has made another FPGA. Now this VHDL code same will be also applicable on that fabric also, or that FPGA also. Just आपको फिर final जब आप place and route करेंगे, वहाँ पे कुछ pin assignments का ध्यान रखना है. So therefore advantage is that VHDL code between different platforms is easy to move and it is portable. One of the major differences here would be that अगर आपने इससे पहले देखा होगा जो previous languages आपने पढ़ी, वहाँ पे आपका sequential execution होगा, जो steps होंगे आपके, लेकिन यहाँ पे जो execution है वो concurrent है. What does that mean? Say if I have 10 students in a classroom and I ask them roll numbers one by one. What's the roll number? He will say 1, 2, 3, 4 and so on. And let's say I ask everyone to answer at a time. So what's your roll number? They all will say at once. So when they will shout at once, this becomes I concurrently
took the roll numbers from them. Otherwise, the previous later method was a sequential method. So I hope that you get my point. What concurrent means? हाँ, concurrent का ये मतलब है कि at a time सारे instruction execute होंगे. लेकिन कैश का ये मतलब है कि फिर VHDL से हम जो अपने sequential circuits वो बना ही नहीं सकते. नहीं, वैसा नहीं है. You will later on see there is something called as process statement. तो जो भी कोई चीज़ हम sequentially चाहते हैं वो VHDL प्रोग्राम के अंदर हमें एक प्रोसेस डिफाइन करनी होती है. उसको हम कहते हैं इट्स मोर लाइक अ सब प्रोग्राम या एक फंक्शन. जिस तरह हम C में फंक्शंस लिखते थे, इसी तरह VHDL में एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रोसेस. उस प्रोसेस के अंदर हम जो भी स्टेप्स लिखेंगे या जो भी कोड लिखेंगे, से फॉर एग्जांपल हमने कुछ 10 लाइन ऑफ कोड लिखी, तो वो 10 लाइन ऑफ कोड सीक्वेंशली एग्जीक्यूट हो जाएंगे. ठीक है. सो बाय डिफॉल्ट इसका जो फ्लो है, आप ऐसे याद रखेंगे, VHDL का जो फ्लो है कंकरेंट है, लेकिन सीक्वेंशली एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें प्रोसेस का यूज करना पड़ता है. ठीक है जी. मूविंग ऑन, दिस इज अ ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन VHDL Verilog, that Verilog looks like slightly easier, but you will have fewer data types. On the contrary, you will have a lot of data types for your VHDL. So VHDL will have a major advantage that जब आपके बड़े डिज़ाइंस होंगे या जहाँ पे आपको more modular approach चाहिए, where you want to have user defined packages and libraries, वहाँ पे VHDL एक powerful tool का काम देता है. Verilog is more like easy to use, I would say, and you will have but less control or less consistency in this language compared to VHDL. So in VHDL you will have configuration, generate, generic and package statements. All will help you to manage the large designs. So this is the concluding slide, most probably of this first session. Now this is important. We need to understand. अब मुझे अगर VHDL program start करना है, how do I start? Obviously it will start, I mean programming अगर start करनी है, it will start from a VHDL program. उसके लिए मुझे VHDL लैंग्वेज के बेसिक कुछ पॉइंट्स समझने हैं. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द VHDL डिज़ाइन फ्लो और VHDL कोडिंग डिज़ाइन फ्लो इज VHDL एंट्री. वी हैव अ प्रोग्राम, वी राइट इट यूजिंग VHDL लैंग्वेज and we compile it. This compilation will generate a netlist. Now what does netlist means? Netlist क्या समझ आता है आपको? Net हो गया एक जाला. So एक जाला सा बन जाता है which tells you about किस मॉड्यूल के आउटपुट को किसके इनपुट में जाना है, इसका आउटपुट किसके इनपुट में जाएगा. सो यू हैव समथिंग कॉल्ड एज अ नेट लिस्ट. सो यू हैव मॉड्यूल्स कमिंग अप एंड हर एक मॉड्यूल में इनपुट और आउटपुट लिखे होंगे, दिखाया जाएगा कि इसका आउटपुट इसमें जा रहा है, उनके नाम से ही आपको पता चलेगा. सो द फर्स्ट थिंग व्हाट अ कंपाइलर डज, इट जनरेट्स अ नेट लिस्ट फाइल. उस नेट लिस्ट को ऑप्टिमाइज कंपाइलर खुद ही कर लेगा, ये आपको नहीं करना है. बट ऑप्टिमाइज नेट लिस्ट के बाद आप सिमुलेट करेंगे. अगर आपको लगता है कि सिमुलेशन रिजल्ट सही नहीं है, यू विल गो बैक टू योर VHDL प्रोग्राम, यू विल री एंटर एंड मॉडिफाई इट, जनरेट द नेटलिस्ट अगेन. हाँ, इसके लिए आपके पास बटन्स होंगे कंपाइलेशन के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए, विच यू हैव टू यूज इफ यू फील लाइक. Once you feel now this optimized netlist is okay, we go for the final step which is place and route. ये बहुत एक important step है, place and route. Please try to understand this. Place and route का मतलब क्या है? आपने जो अपना प्रोग्राम बनाया उससे जो नेटलिस्ट जनरेट हुई, आपका कंपाइलर जो नेटलिस्ट जनरेट करेगा, दैट मे नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ एंड गेट्स और गेट्स. एंड गेट्स और और गेट वो आपके लिए है, लेकिन कंपाइलर के लिए उसके कुछ अपने स्ट्रक्चर्स. फॉर एग्जाम्पल वी हैव समथिंग कॉल्ड एज CLPs, combinational logic clauses, or we have certain cells which are defined by the compiler. तो उसके अंदर वो इम्प्लीमेंटेशन करता है. किस तरह से? इट्स एज गुड एज जिस तरह हम अपना टेबल्स बनाते हैं, ट्रुथ टेबल्स बनाते हैं. सो इस लॉजिक सीक्वेंस के लिए ये आउटपुट होगा. सो इसी तरह आपके कंपाइलर के पास अपनी सेल्स होती हैं, अपने टेबल्स होते हैं, जो जिससे वो किसी डिवाइस का ऑपरेशन डिफाइन करता है. सो दिस प्लेस एंड राउट हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ द काइंड ऑफ structure the compiler understands or the compiler has. So place and route can be now done in two ways. One is that अगर आपका कोई say FPGA है, तो आप उस पे burn करेंगे अपने इस piece of code को. Yeah, I would say a technical word is dump. We dump our code in that FPGA and if we have kind of certain restrictions कि नहीं हम चाहते हैं इसकी placement और routing ऐसे. Place and route is as good as जिस तरह आपके घर में एक प्लान होता है, एक आर्किटेक्चर देता है कि आप किस कमरे को किससे ज्वाइन करेंगे, किसका रास्ता किसको जाएगा. सो दैट इज प्लेस एंड राउट.
प्लेस मीन्स कौन सा कमरा किस डायरेक्शन में होगा. सो लाइकवाइज व्हेन वी कम टू VHDL, प्लेस मीन्स आप कौन सा मॉड्यूल कहाँ पे रखेंगे, एंड राउट मीन्स दैट कौन से मॉड्यूल के कनेक्शंस किस तरह दूसरे की तरफ जाएंगे. सो दैट इज प्लेस एंड राउट. So if you have an FPGA device, field programmable gate array device, you can place and route. You can click on a button and maybe it will automatically be placed and routed. But if you want some control over it, आप चाहते हैं कि अपने तरीके से आप place and route करें, so you may be able to do that also. And there is another way that if you want to design an ASIC for this application specific integrated chip, तो वहाँ पे place and route would mean slightly different. You will have a layout file which you have to generate, and then that place and route file, routed design will be sent to the foundry in the form of GTS2 format, which is a different discussion for us today. So this ends the major description about the VHDL flow. Now let's move on to the main component. क्या है वो main component? कि VHDL कोड जो मुझे एक छोटा सा लिखना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हाउ डू आई मेक दैट. सो एज अ सेड द फर्स्ट थिंग इज VHDL एंट्री, राइट. बाकी सारे स्टेप्स सिमुलेटर पे पता चलेंगे, लेकिन VHDL एंट्री अब करनी कैसे है उसको समझ आसान तरीके से समझने के लिए वी हैव हियर द कोड स्ट्रक्चर. इस कोड स्ट्रक्चर के 3 मेजर पार्ट होंगे. लाइब्रेरी, जिसमें आप लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज डिक्लेयर करेंगे. एंटिटी पार्ट ये आपको कीवर्ड याद रखिएगा, जिसमें इनपुट आउटपुट पिन्स के बारे में आप डिस्क्रिप्शन देंगे या डिक्लेयर करेंगे कि कितनी पिन्स हैं इसमें, उन पिन की डायरेक्शन क्या है, उन पिन का डेटा टाइप क्या है. बस यही 3 चीज़. और आर्किटेक्चर में फिर आप अपना VHDL कोड लिखेंगे, एंड ये तीनों बहुत सिंपल है, बिलीव मी, एंड यू विल सी दिस इन द नेक्स्ट सेशंस एज वेल.